Yeah. So the first question is, at first, Revati's plant did not look normal and healthy because, so why did not they look normal and healthy? Because they were in shadow, right? They could not get the proper amount of sunlight. And she realized कि यार photosynthesis process हमने school में पढ़ा है, and that is why they could not perform the photosynthesis process. Why? Because they were in the shadow, and that is why they did not look normal and healthy. बराबर? Yes. Yeah. When Revati played her favorite raga, the plants began to move. Why? Because it seems that plants were loving her tune. The plants liked its tune, and that is why they bent towards her. Revati's grief knew no bounds because why she was sad, or why यहाँ पे ऐसे दिया है that her grief knew no bounds, because she asked every neighbors of her that whether they have seen the pot of plants of her, but everyone replied no, and that is why she was very sad, and that is why her grief knew no bounds. Next, Revati was confident of proving her ownership of pot of plants. Why? Because she knew there was a secret which they shared, right? That whenever she played her favorite raga, her plants, they bent towards her, and that was one of the secret which she knew, and that is why she was very confident enough of proving that the plant belongs to her. Revati won the prize for the best plants. Why? Because her plants were best looking and they were the healthier ones. Next, Sanjay, आज तक any doubt इसमें? No, ma'am. Okay. What did Revati discover about her balsam plant? What did she discover? That they were growing well, they looked healthier with other plants, right? While comparing to other plants, they look healthier. And she also discovered that when she plays violin, the stem they try to bend towards her. Why did she decided to keep her a new knowledge a secret? Because she felt that it was something that should be only between her and her plants, and that is why she did not tell the secret to anyone, not even her mother. Why? Because she knew na, if she would mention everyone, or if she would tell everyone that her plants were music lover, it would be difficult for everyone to believe that. So that is why she kept a secret between her and her plants. How did the plants respond when Revati played her favorite tune? So how did they respond? हमें पता है. They used to bend towards her. The plant all bent the stems towards her, even there when there was no breeze. How did the plants react to the fast rhythmic music? कि जब रेवती ट्राई करती है कि मैं कोई दूसरा ट्यून बजाती हूँ तो क्या करते हैं? The plants turn away from her, कि जो उसके तरफ बेंड हो रहे थे वो क्या होते हैं? उससे दूर हो जाते हैं. And that is when she realized कि yeah, my plants love my music. How did Revati prove to the organizers of the competition that the plants truly belong to her? So we have seen वो क्या करती है? She plays her favorite tune or raga, and then when the plants bend towards her, the organizers they realize that yeah, the plants belong to Revati. What helped Revati to claim her plants? Her belief in magic or her belief in her conviction? Now ये थोड़ा एक personal response question है कि आपको क्या लगता है कि वो magic में believe करती थी, that made made it possible for Revati to claim that her plants belong to her, or her belief in her convictions? तो ये magic तो नहीं था, right? But she believed in her convictions. क्या? कि उसके प्लांट्स उसको ही बिलोंग करते हैं. शी वॉज श्योर. एक उसका कन्विक्शन जो था कि मेरे प्लांट्स क्या है, मेरे तरह ही दे आर म्यूजिक लवर्स एंड दे वुड रिस्पॉन्ड टू द फेवरेट ट्यून. जैसे उन्होंने पहले दूसरा ट्यून बजाया था तो उन्होंने अलग हो गए थे. सो दैट वाज नॉट अ मैजिक, राइट? इट वाज अ कन्विक्शन, एंड दैट इज व्हाई इट वाज अ ट्रू फैक्ट. समझा बच्चा? Yes, ma'am. या अभी थोड़ा ग्रामर पार्ट हम लोग देखते हैं. A word chain consists of words of a certain category that belongs with the letter that the previous word has ended with. ठीक है, like courtyard हो गया,
तो कोर्टयार्ड से रिलेटेड क्या आ जाएगा, म्यूजिक आ जाएगा. क्यों? बिकॉज फॉर सी द वर्ड चेन एडिंग 4 nouns फ्रॉम द टेक्स्ट लाइक म्यूजिक, कोर्टयार्ड आ गया, राइट. फिर अभी यहाँ पे डी दिया है, तो और आपको ऐसे वर्ड्स निकालने हैं एंड देन नाउन विच बिलोंग्स टू इट. वैसे तो कोर्टयार्ड, फिर डेज, सरप्राइज, इवनिंग, ग्लोब, समथिंग लाइक दिस यू कैन राइट. बेसिकली क्या होना चाहिए दैट द प्रीवियस वर्ड इज एंडेड विथ, कि यहाँ पे जैसे अभी म्यूजिक है तो म्यूजिक का लास्ट वर्ड क्या है, सी. तो टेक्स्ट में से ही आपको कोई ऐसे वर्ड्स निकालने, तो फ्रॉम सी उसने एक अलग से नाउन यूज किया विच वाज कोर्टयार्ड. नाउ कोर्टयार्ड का एंडिंग किससे हुआ, डी से हुआ, तो उसने डेज यूज किया. फिर एस का, शी वाज सरप्राइज, शी वाज एस्टोनिश, तो शी यूज द वर्ड एस. एस से फिर सरप्राइज आया, एंडिंग कम्स विद ई, तो ई से उसने इवनिंग लिखा. Understood what they have done in this? Yes, ma'am. Yeah. Now see this. Add the appropriate prefix to make the following words opposite in meaning. कि यहाँ पे जो word दिया है उसका आपको opposite बनाना है, तो ऐसा कोई prefix डालना है आपको. prefix क्या होता है, जो हम starting में डालते हैं word के, right? तो Yes. कंटिन्यू है, या तो कंटिन्यू का ऑपोजिट मुझे क्या करना है, डिसकंटिन्यू. और मैंने प्रीफिक्स क्या डाला यहाँ पे, डिस करके मैंने प्रीफिक्स डाला. फिर डेफिनाइट, डेफिनेट का ऑपोजिट इनडेफिनाइट, एंड आई एन करके मैंने प्रीफिक्स डाला. प्लेस, डिसप्लेस, अगेन द प्रीफिक्स इज डी आई. पॉसिबल, impossible, the prefix is I am. Understanding, believe, unbelief, known, unknown, certain, uncertain, important, unimportant, and regular, irregular. And if you see, the prefix is added in every same word to make it the opposite word. Getting it? Yes. Yeah. Use the following expressions to make sentence of your own. ये सारे जो हमने आज चैप्टर में देखे उसको आपको खुद कोई sentences बनाना है. See, make up one's mind. What is make up one's mind? To decide. So I make up one mind that I was participate in the singing competition, or you can write anything that you decided, something like that. So over here it means that I decided that I would participate in the singing competition. You can make something else also, no issues. Stuck as odd. Stuck as odd का हम लोग ने क्या meaning देखा था? Stuck as odd मतलब it makes her look strange, right? The glass fallen down without push them as it stuck as odd. Stuck as odd is basically to look strange. तो glass क्या गिर गया, but without pushing, without anyone pushing it, the glass has fallen down, and that is something which looks strange. Getting it? Yes, ma'am. Yeah. Knew no bounds. Knew no bounds मतलब क्या, कि कोई ठिकाना नहीं रह जाना. हम बोलते हैं ना, my joy knew no bounds when I saw the little puppy on my bed, कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रह गया. तो something like that which we call in English. Flash across one mind. Flash across one mind मतलब क्या, क्लिक होना, या हम जिसे हिंदी में बोलते हैं चमक जाना, चमका मेरे को, हम ऐसे बोलते हैं ना, वैसे flash across one mind is to get clicked. When mother saw the tears in Ramu's eyes, it flashed across one mind that there was some problem. Sure, but when mother saw Ramu's eyes, he was crying. तो मम्मा को ऐसे क्लिक हुआ कि जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम है. To surmise. Surmise का मीनिंग हम लोग ने देखा था, supposing something is true. कि जो रेवती का सरमाइज था, कि जो उसे लग रहा था, to suppose that something is true. He must have surmised that I was not interested. He must have assumed, आप बोल सकते हो, या एक assumption, कि जो उसका एक assumption था वो true हो गया वैसे. So he must have assumed that I was not interested. Not to deter. Not to deter मतलब क्या, deter is discourage. She decided that no matter what ये लोग मेरा fun उड़ा रहे हैं, I won't be discouraged. तो यही not to deter is not to be discouraged. The loss of a leg did not deter Sudha Chandran from dancing. ठीक है, कि उसका सुधा चंद्रन जो डांसर है उनका एक लेग नहीं है, but that did not discourage her from dancing. Clear? Any doubt? No, ma'am.
Yeah. Now, suppose you have a best planned competition in your locality, okay, and that you need everyone to, to know that you have a competition which is being held in your society. So you need to create a poster. It is a poster making thing. You need to make a poster in which you need to add such points like name of the organization who is organizing this event, name of the contest. के contest का नाम क्या है, the day, the date, the venue where and where it is being held, who can participate, the prizes what will you give, and the contact detail if anyone have any inquiry फिर वो contact कर सकते हो. तो ये एक poster making है. तो आप अच्छे से ऐसे square shape बना सकते हो. इसमें you can write the organization name. यहाँ पे मैंने green वाली organization लिखा है. तो competition का नाम है best planned competition. एंड यहाँ पे आपको क्या लिखना है, डे डेट लिखना है. तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज for the information that the Green Valley organization is going to organize best plant competition, who is eligible. So everybody and anybody who wants to participate are eligible. The day should be given, the date should be mentioned, the venue should be given कि कहाँ पे ये held हो रहा है, at what time it is being held, वो mention करना है. प्राइस क्या है, अगर कोई जीता तो उनके क्या प्राइस है. सो वन विल रिसीव अ क्रैश प्राइज और समथिंग एल्स, यू कैन राइट योर विश. एंड अ कॉन्टैक्ट डिटेल शुड बी मेंशन, सो इफ एनीवन हैव अ डाउट दे कैन कॉन्टैक्ट देयर फर्दर. इज इट क्लियर? ऐसा कुछ भी आप छोटा सा प्रॉपर पोस्टर बना सकते हो, बट इट शुड मेंशन ऑल द रिक्वायरमेंट्स. इजी? Yes. Yeah, now we have studied kinds of sentences, right? हम लोग ने last मतलब schools में हम लोग ने पढ़ा है कि कैसे sentences, याद आ रहा है? We had assertive, exclamatory, imperative, ये सारी चीज. तो हमें यहाँ पे बताना है that what are these sentences, how happily she played the violin. So remember it is an exclamatory mark. तो ये sentence कौन सा हो जाएगा? Exclamatory sentence. They all bend towards her. Now assertive sentence क्या होता है? Basically जिसमें नहीं, assertive नहीं, affirmative is basically a sentence which does not have a negative into it. So assertive is, which one is assertive बच्चा? हम्म, भूल गए सब sentences हम लोग ने किए हैं वो, नहीं. Which one is assertive? Affirmative याद आया? Affirmative is the one which should not contain a negative word. फिर एक negative होता है. Negative क्या होता है? जिसमें not, never ऐसे आ जाता है. That becomes negative. Imperative is when you imperative imperative कौन सा होता है? जब आप एक कंप्लेन करते हो या ऑर्डर देते हो. So that becomes imperative. So assertive कौन सा हो जाता है? Assertive या declarative? It can either be affirmative or negative. ठीक है, कि basically affirmative या negative दोनों अगर part आ जाता है तो वो assertive हो जाता है. So they all bend towards her. तो ये कौन सा आ जाएगा? Assertive. या तो आप इसमें affirmative भी लिख सकते हो because ये negative नहीं है. Don't play that quick tune. ये क्या हो गया? ये एक मैं order दे रही हूँ, that don't play that quick tune. So when you're giving order or request or command, that becomes imperative sentence. She kept the knowledge a secret. Again, this can be affirmative या तो आप उसे assertive भी लिख सकते हो. How can plants enjoy music? This is again a question which is asked. So this becomes interrogative sentence. Getting it? Yes, ma'am. Yeah. Yeah. How proudly did Revati carry home her prize? Again, it is an exclamatory sentence because it is representing how happy she was. What could have taken my plans? Again, a question is asked, so it becomes interrogative sentence. The organizers were not convinced. Abhi not aa gaya yahan pe, so it becomes a negative sentence. Assertive
में दो टाइप्स होते हैं, यू हैव अफर्मेटिव एंड यू हैव नेगेटिव. सो टू बी प्रिसाइज आप उसे नेगेटिव भी लिख सकते हो, बिकॉज असर्टिव में जो दो टाइप्स है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, ये दोनों ही हमने पढ़े हैं. तो यू नो दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस. व्हाई? बिकॉज इट बिलोंग्स, इट हैज द वर्ड नॉट इनटू इट, सो यू कैन राइट इट, और ज्यादा पॉइंट्स मिले, और ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. चलो, now this is like not many, yeah, they have given you words in the corner and you need to write in the sentence, but the meaning of the sentence should not be changed. So see, this is the first one which is asked. There were a few potted plants in the courtyards. ठीक है, तो इसको आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो आपको नॉट मेनी डालना है, बट आपका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे क्या लिखा है, देयर वर अ फ्यू पॉटेड प्लांट्स इन द कोर्टयार्ड. के कोर्टयार्ड में थोड़े से ही प्लांट्स थे. नाउ यू नीड टू ऐड द वर्ड नॉट मेनी इन द सेंटेंस. तो मैं क्या लिखूंगी, देयर वर नॉट मेनी पॉटेड प्लांट्स इन द कोर्टयार्ड. तो मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ. मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ कि कोर्टयार्ड में ज्यादा प्लांट्स नहीं है, मतलब ही कोर्टयार्ड में कम प्लांट्स है. तो मीनिंग मेरा चेंज नहीं हुआ. समझा? Yes, ma'am. Yeah, they looked healthier than the other plants. Again, अब मुझे इसको नेगेटिव बनाना है, तो they looked healthier than the other plants. तो मैं लिख सकती हूँ they look not healthy as other plants, या तो फिर other plants did not look as healthy as they. तो you can add something like that. But एक चीज याद रखनी है कि जब आप सेंटेंस को चेंज कर रहे हो तो उसका मीनिंग जो है वो बदलना नहीं चाहिए. शी रिफ्यूज टू शेयर द सीक्रेट. ओके, यहाँ पे क्या आपको डालना है, शी वुड नॉट. सो वही लिखा है यहाँ पे, शी वुड नॉट, शी रिफ्यूज टू शेयर द सीक्रेट. उसको वुड नॉट डालना. सो शी वुड नॉट allow, नहीं चलेगा, यही आ जाएगा फिर. would not may be in the sentence, it might be not going into it, that is why they have written the same sentence again. She refused, yeah, she went around asking everyone about her plants. यहाँ पे इसको क्या डालना है, no one or did not. So she went around asking no one about her plants. She went around asking everyone about her plants. So this is a wrong sentence. यहाँ पे आपका meaning change हो गया, तो ऐसे नहीं आएगा. यहाँ पे they have written it wrong. She went around asking everyone about her plants. There was no one who was left when she did not ask them about her plants. Something like this you can write. Getting it? Yes, ma'am. अगेन सी. नाउ यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में डाला, राइट. अभी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव सेंटेंस आपको दिया है, आपको उसको अफर्मेटिव में डालना है. तो यहाँ पे देखो, देयर वाज नो ब्रीज, तो नो है, इसके लिए ये सेंटेंस कौन सा हो गया, ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया. अभी मुझे इसको अफर्मेटिव करना है, मतलब मुझे कोई एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसमें नो, नेवर ऐसे वर्ड्स ना हो, एंड वो सेंटेंस का मीनिंग भी सेम रहे, और वो सेंटेंस पॉजिटिव भी बन जाए. तो यहाँ पे यू हैव गिवन ऑप्शन साइड में, हार्डली. तो आप ऐसे लिख सकते हो, देयर वर हार्डली एनी ब्रीज. तो एक ही मीनिंग हुआ, राइट. देयर वाज नो ब्रीज और देयर वर हार्डली एनी ब्रीज, तो मीनिंग भी सेम हो गया, एंड सेंटेंस नेगेटिव में से पॉजिटिव में भी कन्वर्ट हो गया. Their ridicule did not deter her. मतलब क्या, कि उनकी जो हंसी थी उससे वो डिस्करेज नहीं हुई. सो यहाँ पे आप उसको नेगेटिव है ये सेंटेंस, बिकॉज यहाँ पे नॉट है, तो आप उसको पॉजिटिव कैसे बनाओगे, their ridicule failed to deter her. So the meaning remains the same and negative का positive भी बन गया. Are you getting it? Yes, ma'am. Yeah, see this sentence. She did not give up. ठीक है, तो इसी को मुझे सेम मीनिंग में लिखना है, बट मुझे नॉट को हटा देना है. तो मैंने क्या लिया, मेक श्योर यू आर यूजिंग ऑपोजिट्स, ऑपोजिट वर्क्स. सो शी रिफ्यूज टू गिव अप, द मीनिंग रिमेन्स द सेम एंड द सेंटेंस एंड बी हैज बीन चेंज्ड इनटू अ पॉजिटिव सेंटेंस. नेक्स्ट, हर मदर न्यू नथिंग अबाउट इट, कि उसकी मम्मा को कुछ नहीं पता था रिगार्डिंग हर. हर मदर denied to knew about it. That is something you can write. ऐसे मत लिखो, her mother denied to knew about it. Getting it? So that is how we come towards the end. समझा ये grammar वाला part? Yes, ma'am. Okay. Any doubt in this? No.